Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Textbook Super Coaching. I hope all of you are doing really well और I hope आप लोगों ने अच्छी तरह से कल के सेशन को रिव्यू कर लिया होगा. जैसे कि I was telling you, ना सिर्फ गेट एग्जाम के लिए बल्कि आपके अन्य सेट एग्जाम्स के लिए भी हम क्या आजकल देख रहे हैं कि आपके इंडियन राइटर्स का जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और इसीलिए अब आगे आने वाले सेट एग्जाम्स, काफी सारे जो सेट एग्जाम्स या गेट एग्जाम आपके लिए आ रहे हैं, हम लोग अच्छी तरह से टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स को कवर करेंगे. ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक, अच्छा आप अपने मास्टर क्लास का भी स्केड्यूल लिख लीजिएगा. नेक्स्ट वीक आपकी जो मास्टर क्लास रहेगी, आई जस्ट शेयर इट ऑल्सो, एक सेकेंड, आई जस्ट पुट इट अक्रॉस ताकि सबको पता चल जाएगा कि सेशन हैज स्टार्टेड. ओके, आप लोगों का जो राइट आप लोगों का जो ओवरऑल पूरा का पूरा मास्टर क्लास का प्लान होगा नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे रहेगा. मंडे ऑल द वे टिल फ्राइडे 10 o'clock. और हम लोग मास्टर क्लास में इस पर्टिकुलर वीक ना सिर्फ मतलब क्वेश्चंस करेंगे बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द डे भी है. तो अच्छी तरह से आप टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा. ये आपकी मास्टर क्लास का स्केड्यूल रहेगा. मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर दूंगी. ठीक है, सो नेक्स्ट वीक मंडे से फ्राइडे 10 PM आप लोगों की मास्टर क्लासेस रहेंगी. सो प्लीज इंश्योर कीजिएगा. मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे उसका लिंक भी भेज दूंगी. ऑलराइट, गुड इवनिंग देवशीष, सिमर, प्राचिता, श्वेता, पद्मा. अब आई होप आप लोगों ने कल के सेशन को अच्छी तरह से रिव्यू कर लिया होगा, कल के सेशन को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा. कल हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, राइटर्स लाइक जीवी दिसानी, भवानी भट्टाचार्य, किस तरह से एलन सीले आ रहे हैं व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द थ्रोतरनामा, इफ यू रिमेंबर राइट. तो हम लोगों ने ये सारे राइटर्स और इनके वर्क्स, आपका कैसे उपमन्यु चैटर्जी आ रहे हैं इंग्लिश ऑगस्ट के साथ, दैट इज ऑल्सो वर्क दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. सो अगेन when we are looking at, good evening Monica, good evening Shubhi, good evening Shraddha, Padma. So what are we able to see? We are able to see, just give me 1 second, I'm so sorry. So sorry. Right. So what are we able to see? What are we able to look at? What are we able to visualize over here? We are able to see कि हम लोगों ने एक तरह से डेवलपमेंट बिगिनिंग ऑफ इंडियन नॉवल को देखा था. याद है आपको, ट्रैवल्स ऑफ डीन मोहम्मद से हमने स्टार्ट किया, फिर राजमोहन वाइफ, फिर किस तरह से वी मूव्ड ऑन एंड वी लुक्ड एट बियांका बाय तोरू दत्त एज वेल. ये सारी चीजें आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज कर ली होगी. राइट, आई होप everybody would have actually reviewed all of these things properly, right? Good evening, Ashoka. Good evening, Shabnam. गुड इवनिंग. नाउ आज जैसा कि हम लोगों ने कल जहां पे स्टॉप किया था वुमेन राइटर्स के ऊपर, इंडियन वुमेन राइटर्स, इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स में जो वुमेन राइटर्स आ रहे हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे. अभी एक पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक और पार्ट देखेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम जैनिस फेरियट फॉर इंस्टेंस, या फिर आपका यूनिस डिसूसा हो गए. देयर आर न्यू वुमेन राइटर्स आल्सो हु आर कमिंग. लेकिन न्यू वुमेन राइटर्स को करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आल्सो नो कि इंडियन इंग्लिश नॉवल का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वुमेन राइटिंग्स की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें वुमेन राइटर्स कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें वुमेन राइटर्स का क्या स्कोप रहता है, किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दैट. मोनिका, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया है, मैंने ये बता दिया है और ये स्केड्यूल मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगी. तो आपका 5th Feb से, ठीक है, आपकी 5th Feb से, सो 5th 6th 7th 8th वो पूरा का पूरा वीक जो है मंडे टू फ्राइडे 10 PM होगा. और हम लोग वीकेंड पे भी आई विल ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस सेशंस वाया मास्टर क्लास. ठीक है, तो वो पूरा का पूरा स्केड्यूल यू विल गेट फ्रॉम द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म. शिवा, गुड इवनिंग. चलिए अब जल्दी से आज के मेन टॉपिक पे आते हैं. अब मीनाक्षी मुखर्जी ने क्या बोला है. मीनाक्षी मुखर्जी ने एक वर्क लिखा है, ट्वाइस बॉर्न फिक्शन. ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है. और मीनाक्षी मुखर्जी क्या बता रहे हैं, मीनाक्षी मुखर्जी कह रहे हैं कि 3 तरह के आपको फिक्शन मिलेंगे विच यू आर एबल टू सी. एक तो फ्रॉम 1920s टिल 1970s, थोड़ा सा हिस्टोरिकल, सोशियो पॉलिटिकल, नॉवल ऑफ आइडेंटिटी. तो मीनाक्षी मुखर्जी क्या कह रही है, मीनाक्षी मुखर्जी कहती हैं कि जब आप इंडियन राइटर्स को देखते हो, इंडियन वर्क्स को देखते हो, तो 3 कैटेगरी, सोशियो पॉलिटिकल, राइट, हिस्टोरिकल और नॉवल ऑफ आइडेंटिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट तरह की कैटेगरीज you are able to see. This is what Meenakshi Mukherjee is trying to tell you. ठीक है, सो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है.
कि किस तरह से अपनी क्रिटिकल वर्क के अंदर ट्वाइस बॉर्न फिक्शन में मीनाक्षी मुखर्जी आइडेंटिफाइज के लोग या तो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बोल रहे हैं, हिस्ट्री को पकड़ रहे हैं, या फिर नॉवेल्स ऑफ आइडेंटिटी को लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसी नॉवेल्स जो आपको आइडेंटिटी के बारे में बताती हैं, दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी। ओके, शबनम कह रही है ऐप पे अपडेट हो गया, यस दैट्स राइट, टीम ने वैसे बोल दिया था आफ्टरनून में शायद ऐप पे अपडेट हो गया होगा। 5 फरवरी से आपकी मास्टर क्लासेस स्टार्ट हैं। थोड़ा अब आप फरवरी के मंथ में टेलीग्राम पे भी काफी एक्टिव रहिएगा, मैं काफी सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के थ्रू सेंड करने वाली हूँ, तो उसमें प्लीज थोड़ा सा आप रेडी रहिएगा। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये, और ये काफी सारे लोग कहते हैं पहले इंडियन राइटर्स इमिटेट कर रहे हैं, जैसे अगर आप एम के नायक को करोगे, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा जो मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था, तो उसमें अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा क्या बता रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि पहले इंडियन राइटर्स इमिटेट कर रहे थे, फिर उसके बाद इमिटेशन के बाद दे वर मूविंग अहेड एंड आइडेंटिफाइंग देयर ओन टोन ऑल टुगेदर, एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन दे एक्सपेरिमेंटेड आफ्टर मेकिंग इंडियन इट्स ओन लैंग्वेज। तो मीनाक्षी मुखर्जी ट्वाइस बॉर्न फिक्शन, 3 पार्ट्स में लिटरेचर डिवाइडेड है, you will have to keep this in mind. Okay, now when we are talking about women writings, हम क्या देख पाती हैं, that Indian women writings, like I said, हम लोग इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है, ये जो सेशन है आपका ये टेक्निकली 2 पार्ट्स में रहेगा, ये 2 पार्ट्स के अंदर we will be covering this entire unit of yours all together, and सबसे पहले अगर हमारी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, ठीक है, सबसे पहले अगर हमारी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम होगी समझने में। I'm so sorry. So what are we able to see? We are able to see that when we are talking about women writings, women development, जैसे कि मैंने कहा कि important women writers जो modern age में आ रहे हैं और लिख रहे हैं, contribute कर रहे हैं, जैसे अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, तो वहाँ पे नमिता गोखले is a very important person. नमिता गोखले ने ही उल्टा पूरा का पूरा आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को सेटअप किया है एज अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस वेयर पीपल आर कमिंग, लिटरेचर बेस्ड बैकग्राउंड की डिस्कशंस हो रही हैं। सो नमिता गोखले इज ए न्यू एज इंपॉर्टेंट राइटर। तो ये सारे जो राइटर्स हैं, यूनिस डिसूजा, नमिता गोखले, न्यू एज वुमेन राइटर्स लाइक जैनिस पैरेट, सो इन सब को हम लोग अपने सेकंड सेशन में करेंगे। आई होप आप इसको क्रोनोलॉजिकली अच्छी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं। कल हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश को देखा, बहुत सारे राइटर्स देखे, जैसे चमन नहल का आजादी, खुशवंत सिंह से चेन टू पाकिस्तान, आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट राइट, मनु माजरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सो पार्टीशन नॉवेल्स में आ रहा है, यस दीक्षा, अडैप्ट अडॉप्ट एंड अडेप्ट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट। राइट, तो ये चीज आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। शबनम प्लीज इंश्योर कीजिएगा, मैंने काफी बार बताया हुआ है यूट्यूब के सेशंस के लिए, आई वांट यू टू राइट इट डाउन। ओके, तो ये आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स। बाकी जो पीडीएफ्स होते हैं दैट ऑफ कोर्स आई शेयर, क्योंकि सी ऑल ऑफ दिस कंटेंट वी आर क्रिएटिंग फॉर यू ओनली। ओके, बट माय पॉइंट इज अगर आपको पीडीएफ मिल जाता है, यू आर नेवर इन एक्टिवेटिंग योर मोटर स्किल्स, आप लिखते नहीं है तो बेसिक चीजें नहीं आती हैं, तो प्लीज इंश्योर कीजिएगा। बट रीडिंग के लिए पीडीएफ ऑफ कोर्स आई शेयर दैट। ओके, so what are we able to see? Women writings are also coming in. Women writings are also coming in. Writers like Shashi Deshpande, Nayantara Sehgal, Anita Desai, Ruth Pravar Jhabwala. Ruth Pravar Jhabwala, particularly the way that she carried herself is like, a writer that I kind of really got really excited, especially when you read the content that she's written. Kamala Markhandia, Arundhati Roy. So these are a few important women writers that we'll cover today. And like I said, ये women writers का first part है, ठीक है? This is the first part of women's writings, ठीक है? This is part number 1. This is part number 1 that we are talking about. तो women writings, women literature का ये first part है आपका. Okay, good evening, good evening. Okay, Shabnam, I'll just see मेरे पास PDF होगा तो of course I'll share. Now, writer who's writing Nectar in a Sieve, that is Kamala Markhandia. जैसा कि मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा था, या तो लोग सोशियो कल्चरल सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में लिख रहे हैं, हिस्टोरिकल लिख रहे हैं, या नॉवल ऑफ आइडेंटिटी लिख रहे हैं। सो कमला मारखांडिया कम्स इन. कमला मारखांडिया इज अ रियली इंपॉर्टेंट, got it Shabnam, don't worry, I'll just check it out, but don't worry. Now when we are talking about Kamala Markhandia, why is Kamala Markhandia so important? Kamala Markhandia क्यों important होती हैं? Now, when we are talking about most of these writers who are writing, they obviously are coming from a particular stature. तभी ये लोग literary, so-called exchange में they are all able to
actually correlate and talk about. So Kamala Markandeya actually migrated to England at the age of 25 after she got married to Bertrand Taylor. Bertrand Taylor से इनकी शादी हो गई थी. And what you were able to see is she actually experimented with writing, all right? और हुआ क्या? She was able to actually look at her experiences of India, and she was trying to make sure that she's trying to recreate. तो अभी मीनाक्षी मुखर्जी से हम लोगों ने स्टार्ट किया. मीनाक्षी मुखर्जी ने क्या कहा? 3 तरह की आपकी राइटिंग्स आ रही हैं, जिसमें एक तरह की राइटिंग आपकी क्या है? एक तरह की राइटिंग आपकी सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक, सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. So Kamala Markandeya is coming. Kamala Markandeya is actually writing all together. That is what we are able to see. और Kamala Markandeya का एक बहुत ही important work. I really want all of you to see the cover of this Kamala Markandeya's Nectar in a Sieve if you are able to see. ये पूरा का पूरा आपको स्टोरी का एक तरह से एसेंस बताता है ना. अभी हम लोग क्या कर रहे थे? रिमेंबर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हेनरी मिलर राइटिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो ब्लैक स्प्रिंग विच इज अ कलेक्शन ऑफ 10 स्टोरीज. उसमें हर एक स्टोरी में क्या है? हर एक स्टोरी में एपिग्राफ है जो कि स्टोरी को समराइज करता है ना. अभी क्लासरूम क्लास में फाउंडेशन बैच में यही हम कर रहे थे. तो हियर आल्सो कमला मारखंडिया's पेंगुइन एडिशन दैट यू हैव, इसमें ब्यूटीफुली समराइज किया जाता है नेक्टर इन अ सीव को, राइट? इसमें ब्यूटिफुली नेक्टर इन अ सीव को क्या किया जाता है? ब्यूटिफुली नेक्टर इन अ सीव को समराइज किया जाता है. सो व्हाट वी वर एबल टू सी इज दैट इनकी पहली नॉवल नेक्टर इन अ सीव, इनकी पहली नॉवल नेक्टर इन अ सीव इज कमिंग. द प्रोटैगनिस्ट इज अ वुमन एंड द नॉवल इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू द प्लाइट ऑफ वुमेन ऑल टुगेदर. देखो, women were silent sufferers. Even Henry Lawson, the Australian short story writer, in the form of short stories like The Drover's Wife, tries to tell you about के bush women कितना struggle झेलती थी. Like I was just talking before this class in like after your foundation batch class ended, and then my mom had given me a call because over the weekday she calls me, right? So I was just telling, she's like, okay, after this what will you do? And I told her that I have to wash my clothes all together. So she's like, nahi, our nani was able to do that because she was at home, but considering we are working, we should actually leverage all of these laundry services. So why don't you hire a help to help you out? So what are you able to see? Women were always at the center of doing a lot of labor, doing a lot of hard work, unrecognized hard work. Women and labor में भी उसमें बताया जाता है. So writers like Kamala Markandeya trying to tell you, ये जो women narratives हैं, ये women characters को epicenter में लिख के they were trying to bring in these narratives all together. और उनकी incredible strength. You've seen the movie Mother India, या आप लोगों ने Mother India के बारे में सुना होगा. That's again trying to tell you about the power and strength of women. Okay, so that is what you're able to see, and you're struggling, you're battling, you're fighting against the forces that are just way beyond you, तो कैसे इंडियन पेजेंट वुमन रुक्मणी, पूरी की पूरी रुक्मणी की स्टोरी है, हर लव फॉर हस्बैंड नाथन एंड हर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ऑल टुगेदर. ठीक है, ईस्ट एंड वेस्टर्न वैल्यूज ऑल टुगेदर जो आ रही हैं, एंड वेरी extremely cryptic story. Nathan ka jo character hai, that is also what we are able to see, right? So again, you will have to remember, again you will have to keep it in mind that when we are talking about nectar in a sieve को जब हम देख रहे हैं, हम क्या देख पाते हैं? हम ये देख पाते हैं that Kamala Markandeya is actually trying to tell you the struggles of survival, the struggles, and very beautifully nectar in a sieve में छोटे छोटे episodes कैसे दिए हुए हैं. The first night and the description of the first night where the act of love making is not holding any pleasure for Rukmani, but eventually when she's able to accept these kind of pleasures. So what beautifully women ka overall desires, women ki life, women ki struggles, all these aspects are getting covered by Kamala Markandeya. A beautiful piece to actually even analyze overall. So Kamala Markandeya, hunger, poverty, ये बहुत ही important चीजें जो इंडिया में थी, and अभी भी we struggle with it, right? So that is what you're able to see. Some inner fury is a part of multiple syllabuses, a silence of desire, possession, handful of rice, coffer dams, nowhere man, two versions भी आजकल आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, right? तो ये सारी कमला मारखंडिया की वर्क्स हैं, and like Meenakshi Mukherjee said in Twice Born Fiction, 3 तरह के fiction है, socio-political, socio-cultural, socio-economic, historical and novel of identity. तो कमला मारखंडिया का socio-political है, right? So that is what you are able to see. Yeah, Diksha, unfortunately, right? Right.
Then of course Shashi Deshpande. Shashi Deshpande is also very important writer of short stories. Ulta short stories आपकी आई थी, and later she developed these short stories, right, into her novel writing career also. That is what you were able to see. That long silence आपकी काफी सारी syllabus में है. Binding wine भी आप देखते हो ये आता है, right. Small remedies is also work of Shashi Deshpande that is a part of multiple syllabuses. Again, what you're able to see, Shashi Deshpande, right? Again, what you're able to see, Sara Shabnam, when we are talking about all this, is exactly what I said yesterday. For all of these, right? For all of your exams, so HPSET exam, GATE exam, ये सारे के लिए मैंने कल भी आप लोगों को बताया था हमें क्या क्या चीजें स्ट्रेंथन करनी है. महाराष्ट्र सेट एग्जाम, हमें बहुत इंपॉर्टेंटली अपने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को स्ट्रेंथन करना है. हमें इंडियन एस्थेटिक्स, मैंने कल ही प्रेफरेंस बताया था, इन्हीं से आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे. Put them in order. Which is the character? Rukmani and Nathan are characters in which work of Kamla Markandeya? Put them in chronological order. तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे. एंड पर्टिकुलरली जब आप एचपी सेट का भी पेपर उठा के देखेंगे, देर आर 4 to 5, आप एचपी सेट की वेबसाइट पे जाएंगे, 4 to 5 पेपर्स आपके पास हैं, उनको भी आप देख सकते हैं. Okay, of course, for that long silence, Shashi Deshpande also got the Sahitya Academy Award. और कैसे middle aged educated woman caught between modern trends and traditional practices. This is the story altogether. Jaya की story है, right? This is that long silence. What is the character? Who is the protagonist? Jaya is the protagonist who's getting married, who's married to Mohan, and this marriage is spanning 17 years with 2 children also. Now compare all of these stories. जैसे Kate Chopin का awakening in a very different century. What is Kate Chopin trying to tell you? Edna Pontellier, how she is getting married. What is her marriage? So she's in her 20s, her husband is in her 40s altogether. That is what you're able to see. ठीक है. सो ये चीज आपको याद रखनी है. किंग विक्रमादित्य, यू कैन सेंड मी, आई चेक, आई टेक अ लुक एट इट. ठीक है, आप एक बार ईमेल कर दीजिएगा, विल गिव यू द सपोर्ट एचपी सेट वगैरह का, बिकॉज स्टूडेंट्स हैड ओनली रिटन, तो इसीलिए गेट एचपी सेट, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग. नाउ व्हाट आर यू एबल टू सी इज that her husband is asked to leave his job, okay, and there are allegations of business malpractices against him. They are getting investigated altogether. So Jaya और मोहन की story है, and of course the future of the family is in jeopardy, right? So again, female psyche, ये काजोल की भी एक अभी अभी हाल ही में series आई थी in which she is playing the role of a lawyer, her husband gets trapped altogether. That is what you are able to see. So that long silence is literally trying to tell you about women's psyche overall, the search for identity, parent-child relationship, man-woman relationship altogether. जो real dilemmas होते हैं of middle-class educated women, right? Middle-class educated women. I remember when I was in college, there was a classmate that I had, and this was during my bachelor's, and she had, she had 2 other sisters. There were total 3 sisters coming from very educated family. But still, mother would always be having these issues. No, she really wanted her daughters to definitely work and not stay at home. So, educated middle class women, the psyche that they suffer from, how are they treated? They look nice. It looks like ye Rama Mehta ka Inside a Haveli is a brilliant example of that. Okay, how earlier parents would be like, oh, she should get married, to a very rich household. So, तभी Rama Mehta Inside the Haveli ये बताती है कि ऐसा नहीं है, right? Of course, that is not about educated women inside a haveli, right? Rama Mehta is writing your Inside the Haveli. Okay, Inside the Haveli is coming from Rama Mehta's account. तो यही सारे के सारे आपको बताना चाह रहे हैं. मुश्किल शबनम, थोड़ा आपको वोकैबुलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट? जेपर्डी, यू आर इन प्रॉब्लम, यू आर इन ट्रबल. Very simple. These are simple words altogether. Okay, please remember that. King Vikramaditya, on YouTube there is a place where you can actually increase or decrease the entire pattern, so you don't have to worry about it. Okay. Acha. Now my personal favorite, in a way, Ruth Pravar Jhabwala. Again, when you are able to see, I don't know if you're able to look at it. This exercise notebook. I don't know if you're able to see this notepad. I'll try to hide myself. Yeah. So this is like a exercise notebook that you were able to see of the Neil Ganj notebook that was coming in. So again, when we are talking about Ruth Pravar Jhabwala, born in Germany to
Polish parents. She of course got married to Cyrus Jhabwala. He was there. He was an Indian architect. He was in New Delhi. What are you able to see? She was trying to tell you the Indian social lives, right? The Indian social life. She was called, an insider rather than an outsider. 8 novels, 4 short story collections, screenplays also have been written by Ruth Pravar Jhabwala. Now, why is Ruth Pravar Jhabwala so important? Of course, because Heat and Dust ke liye she's getting international fame and she's getting India on the international literary map altogether. So when we are talking about her most important work, ठीक है, most important. अच्छा, by the way, Esmond in India का question आया हुआ है. Of course, most important work is Heat and Dust. Heat and Dust, right? Heat and Dust. This is one of the major works which actually got Ruth Pravar Jhabwala to get that international recognition overall. And it's very sad that how we are able to see that Ruth Pravar Jhabwala then did not consider herself, right? Did not consider herself to be a proper Indian overall in that particular regard. So ये भी चीज आप अच्छी तरह से देख पाते हो. But again, Heat and Dust, a very important work that is coming out of Jhabwala's pen altogether. It is set in 2 eras, right? Ruth Pravar Jhabwala's Heat and Dust, it's set in 2 eras overall. Colonial India of 1920s and independent India of 1970s. तो यही मीनाक्षी मुखर्जी भी बोल रही थी, है ना, कि आपका 1920s आपका मतलब फिक्शन 3 तरह का आ रहा है. 1920s और 1970s, 1920s and 1970s. 2 women की स्टोरी बता रहा है, 2 women की स्टोरी बता रहा है, right? And it is trying to tell you about emotions of women, their problems all together. That is what you are able to see, how one woman is trying to figure out and unearth the story of a grandmother overall. That is what the story is coming across. But Heat and Dust, actually, the kind of recognition that it got, that really catapulted Ruth Pravar Jhabwala's overall reputation also, है ना? So that is what you are able to see, and this is something that you will have to keep in mind, that when we are looking at Heat and Dust, right? When we are talking about Heat and Dust, when we are talking about overall किस तरह से आपका Heat and Dust आता है, that is one of the important works that we are actually able to see, right? So Olivia, कैसे we are able to see Olivia altogether. She is having a lot of these restrictions. The character of Nawab who is there. तो ये पूरे की पूरी जो स्टोरी आपकी डेवलप होती है, कैसे आपको नैरेटर के थ्रू पूरी स्टोरी पता चलती है. It got the Booker Prize of 1975, so that is of course important. But what are you able to see कि 1920s में ब्रिटिश राज में Olivia is moving to India with her husband, just like Ruth Pravar Jhabwala also came, but not in 1920s altogether. And she feels very stifled by that strict British society. Lagan ke andar bhi, if you remember, the role that is played by the British woman who falls in love with Amir Khan, she's very contrived. तो उस तरह का एक तरह से बताया गया है that how Olivia is being narrated all together, and कैसे letters से you are able to see ये पूरी की पूरी story unearth होती है, right? So what are we able to see, that how 2 contexts are actually coming together, and because this work actually received the Booker Prize, therefore it becomes a really important work. ठीक है, तो ये पॉइंटर आप याद रखिएगा. रूथ प्रवर झापवाला, of course known for Heat and Dust. Nayanthara Sehgal again, Nayanthara Sehgal again, very important, coming from a political legacy altogether, okay, and she was well aware about the political scenario. It's beautiful actually. Abhi bhi, when you go on YouTube, most of these writers, you'll be able to see videos of them. Just see the way that they speak, just see the way that they conduct themselves. It can be criticized as being a little elite, very aristocratic way of speaking, but again, काफी हद तक आपको inspire करेगा. You'll be really proud that okay, you're studying something which has got a proper history and lineage, which of course is under threat because humanities, AI वगैरह, so people are asking its relevance altogether. But clearly we are all consuming entertainment, so entertainment stories ये इन्हीं writers से आ रही हैं, right? So what are we able to see? Prison and Chocolate Cake in net में question आ भी चुका है. This is how she started her work. This is a kind of a memoir. Storm in Chandigarh, multiple syllabuses में है. The partition of Punjab and Haryana, and how all of those details are also being shown all together. Okay, so Storm in Chandigarh is a very important state. It's telling you about the state of Punjab divided into Punjab and Haryana.
how the division took place, how Chandigarh became the capital. So Storm in Chandigarh by Nayanthara Sehgal, Storm in Chandigarh by Nayanthara Sehgal. Okay, so how you were able to see that, कैसे आपका Punjab was more Sikh dominated and Haryana was more Hindu dominated. I again, like I said, the way that look at this typewriter and the way that there is a typing, more all of these writers, you would be able to see some essential video on YouTube. Look at the way that they're speaking, just look at the way that they are speaking altogether. So again, your Sikhs are there, your Hindus are there, and how the novel Storm in Chandigarh is trying to reflect that, right? So sare ke sare works, all of these works are again becoming important. And please remember, she's trying to tell you about social cultural changes. She's trying to tell you about oppressed women altogether, male bondage से ये oppressed women कैसे उभरना चाह रही हैं, कैसे ये women बाहर आना चाह रही हैं, बाहर निकलना चाह रही हैं. That is what we are able to see. And of course, no class on initial women writings can actually go complete without the mention of the pioneer Anita Desai, mother of Kiran Desai, born in Missouri. And she was of course a daughter of Indian businessman and German mother, and a very beautiful eclectic style of writing that you are able to see. Right, she began writing English at a very young age. काफी सारे इनको awards भी मिले थे, right? So Fire on the Mountain, The Guardian Awards. So, what are you able to see? You're able to see that again, a very acclaimed writer, shortlisted multiple times for Booker, but of course, her daughter made her proud by getting the Booker as well. This is one of my. अच्छा, by the way, मैं आपको एक link भेजूंगी Telegram platform पे. That is the British Council link, right? That is the British Council link to South African writers. आप please over the weekend इस पूरे link को consume कर लीजिएगा. You can take a look at it, या फिर आप Google पे भी type कर सकते हैं South Asian Writers British Council. वो वेबसाइट का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी. ये फोटो जो है ये वहां से ली गई है. इट्स अ ब्यूटीफुल वे, बहुत ही सिंपल शॉर्ट स्निपेट्स हैं, तो ऑफ कोर्स आपको सिर्फ स्केलेटन ही देंगे. हनीफ कुरैशी, सारे के सारे जो आपके राइटर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. सो दिस इज अ पिक्चर, आई रियली लव दिस picture. Like I said, like the way that they take you to a different world altogether, they transport you to a different world altogether. That is what you're able to see, right? That is what you're able to look at. Okay, so clear light of the day, it is set in Delhi. All right, and आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो? तारा is married to Bakul, the diplomat from Washington, with whom she visits her home in Delhi every 3 years to stay with Bim and Baba, her elder sister and younger brother. How Tara is recollecting her childhood days when she was less confident, while Bim was strong and attractive altogether. That is what you are able to see. So again, Bim ki character se, Tara ki character se, she's trying to explore the psyche of sensitive women. Past and present may constantly you are shifting. There's element of nostalgia. Clear light of the day that you're able to see. Partition novels में भी clear light of the day को consider किया जाता है, because it's telling you about Indian independence movement altogether. तो अभी तक कल और आज के बीच में हम लोगों ने तीन, नाना करते हुए भी 3 पार्टीशन नॉवेल्स कर लिए हैं. ठीक है, आजादी बाय चमन नहल, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह, क्लियर लाइट ऑफ द डे बाय नीता देसाई. अब अगर आपके क्वेश्चन में आता है पिक ऑड वन आउट, और ये तीनों है और एक ऑड वन आउट है, तो वहां पर यू विल हैव टू यूज योर बुद्धि, एंड आपको फिर यू विल हैव टू डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर टिकिंग द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इस तरह से आपने अलर्ट रहना है और सीखनी है सारी की सारी चीजें. Again, a very famous personality overall, Manju Kapoor. She teaches English literature. While I was compiling this deck for your class today, I was just like, looking back again. You wish to get back to those summer months where you can actually dress up in your saris, and then just make sure that you're able to understand that. Okay, now when we are talking about Manju Kapoor, okay, when we are talking about Manju Kapoor again becomes very important, right? Now why is Manju Kapoor important? एक तो of course इनके works आपको you'll be able to see. even एकता कपूर ने अपना serial बना दिया है इनके work के ऊपर. that's the popularity, right? Difficult daughters, ये आपका DSSP जो एग्जाम होता है उसमें ये बार बार क्वेश्चन हमेशा मंजू कपूर के ऊपर आता ही आता है.
ठीक है. Difficult Daughters is her first novel. Again, it is set in partition. So Difficult Daughters is also a partition novel. तो अभी Clear Light of the Day, बिम तारा की जो story है, that is also set in the partition era altogether. So you'll have to remember that, right? So when we are talking about Difficult Daughters, तीन generation of daughters, third generation से start होके. So the story is seen through the eyes of whom? Eyes of Ida, who's coming back to Punjab to reconstruct her mother Veermati's past. She wants to go back to Veermati's past overall. That is what you are able to see. Okay, Veermati कौन है? Veermati is the eldest daughter who's belonging to this very monk-like austere family of Amritsar. She's torn between family duty and her desire to study, to become independent, and her illicit love for her next door neighbor, a married professor overall that Veermati has, right? So कैसे आपका ida Veermati का जो character है, Veermati का conflict begins when her parents decide to get her married, decide to marry her to a boy of their choice. Then she struggles for freedom, to live her life on her own terms altogether. She refuses to marry the person her parents have engaged, her got her engaged to. So again, Difficult Daughters, कैसे इडा वीरमती किस तरह से perspective से आपको बताया जा रहा है. Of course, as a punishment, she sent to Lahore to study, but she's able to pursue her study as well as be the professor without any interference altogether. So Difficult Daughters by Manju Kapoor. ठीक है. Of course, she defies her family, society, and marries the professor who already has a wife. ठीक है. So Kasturi, Veermati, Shakuntala, Ida, they belong to different generations altogether, but they have been difficult daughters for their parents. Difficult daughter, again, wo angel witch dichotomy. If you're asserting yourself, you're a difficult daughter. If you're asserting yourself, you're becoming a difficult daughter. That is what Manju Kapoor is trying to highlight over here. So again, how women, educated middle class women, their entire fight against patriarchal institutions, that is something which gets highlighted over here. Absolutely right. Absolutely right. So Kasturi, Veermati, Ida, Shakuntala, all of these characters that are coming in difficult daughters set amidst the partition. ठीक है, set amidst the partition. Of course, now moving on to the end of this session, क्योंकि आज हम लोगों ने जैसा कि बोला, we will be covering a few writers only, and in the second part we'll actually be taking our discussion forward. This is the last writer for today. Again, a very important writer, Arundhati Roy. ठीक है. Arundhati Roy, she was born in Shillong, Meghalaya, to Keralite, a Syrian Christian mother and a Bengali Hindu father. By profession was a tea planter altogether. God of small things, very important. ठीक है. She started writing in 1992 and she completed it in 1996. But such a stellar work, right? But such a stellar work that you were able to see. Arundhati Roy actually became the first Indian citizen to actually get the Booker Prize. All right, it is set in Kerala. It's set in Kerala. It's talking about Apka Sanam Sai. She's a, she is an Urdu serial actress. She's also written आपकी तलकियां करके एक उर्दू सीरीज है जिसमें आपका यही God of Small Things को डिस्प्ले किया हुआ है. How you are able to see twins Estha and Raquel and their mother, right? Their mother. Now, her mother has left the violent husband, and she's come back, right? She's come back altogether. किस तरह से the death of this cousin, Sophie Mall, who's come to visit on a holiday, really causes their lives, upside down overall. तो बहुत ही vivid तरीके से abject poverty, sadness, किस तरह से, at the end, the two siblings are actually able to comfort each other. They are able to come together. A very beautifully poignant tale, a beautifully written poignant tale that comes across God of Small Things. उल्टा इसको भी अच्छी तरह से go through कीजिएगा, right? So, from Manju Kapoor to Shashi Deshpande to Kamala Markhandeya, to Arundhati Roy, to how Anita Desai, all of these writers are actually contributing, ठीक है? All of these writers are contributing to the development of early stage of Indian writings coming from the pen of women. ठीक है. So what I want you all to do, like I said, we'll be taking it to the next level. We'll be taking it to the next part as well. और आपके upcoming set exams, net exams, gate exams, इन सब के लिए ये सारे के सारे works definitely काफी important हो जाते हैं.
So just compile your notes correctly, put them together. We will be practicing a lot of these set questions also in the coming week. और please I hope आपको clear होगा. Monday to Friday next week 10 o'clock आपकी master class है और Monday to Friday next week 10:30 p.m. पे आपकी YouTube की class है. In case if there are any other questions that you're having, you please let me know. Any help you need, you please let me know on neerja.raheja.faculty@testbook.com. You please get back to me with all those details. Okay, in case if there are any other doubts, in case if there are any other questions, concerns, of course keep me posted about that. So I will catch up with all of you. I will catch up with all of you next week. अगर कोई और problem हो तो do let me know about it. Fine. Thanks everyone for joining. Really appreciate everyone joining on time. Don't forget your 11/11 manifestation. Next week से थोड़ा लंबा ड्यूरेशन रहेगा क्योंकि हम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे along with concepts. But I hope आप अच्छी तरह से सारे के सारे लिंक कर लेंगे. Okay. In case if there are any other concerns, keep me posted. Okay. Thanks, Devashish. Take good care of yourselves. I'll catch up with all of you on Monday. Bye. Thank you. Thank you. Thanks, Simar. Thanks, Monica. Thanks, Summer. Yeah, Monica, God of Small Things को please एक बार अच्छी तरह से कर लीजिएगा. Please cover that end to end, okay? That is of course important. All right. Bye everyone. Please review everything जो हम लोगों ने कल और आज करा है. And if there are any other concerns, you please keep me posted about that. Okay? Thanks, Anjali, Sushmita, Shabnam, Zamar, Monica. Good night, everyone. Sweet dreams. Bye. Take care.